lithosphere. Huh? This is cross continent. This is ocean. This is ocean. Just like this. Oceanic lithosphere is less. Continental lithosphere is high. Now, tell me whether these two graphs are correct. Two lines I have drawn. This is the geothermal gradient for oceanic crust. This is the geothermal gradient for thickened crust. Thickened crust. This word also you should know. Gradient for thin crust. This word also you should know. Thin crust and thick crust. Thin crust होगा तो कम डेप्थ में बहुत टेम्परेचर मिलेगा. ये ग्राफ मीन्स वही है ना. 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री. With less depth, the temperature will be high. For thin crust. For thick crust, crust ज़्यादा होगा. You have to go really very deep to get higher temperature. मेरा बात समझा कि नहीं? These two graphs. For a thin crust, for a thick crust. These are the geothermal gradient. See, it is not uniform. 25 degrees is an average one. Otherwise, approximately 15 to 20 and 30 to 40 degree centimeter per kilometer. This is the heat flow coming from the core to the surface. मेरा बात समझा कि नहीं समझा? Now, Himalaya में पूछूंगा. हिमालय. Is it a thick crust or thin crust? Thick crust. So heat flow will be less. होगा ही क्या पता? थोड़ा सा होगा. Heat flow is less because thickened crust. Arabian Sea. Arabian Sea is there is no crust. Thin crust. तो oceanic crust थोड़ा है और lithosphere है. So high heat flow. But Himalaya में there is no heat flow. Very less. Understood now? Thick crust and thin crust. I can give an example here. Himalaya. You can call it a mobile belt. Mobile belt. Here is your ocean. समझा कि नहीं समझा? कहाँ थिन है कहाँ ठीक है? Now, ठीक है? Now you tell me. Suppose I am taking example of Gondwana. Gondwana का thickness कितना है? Gondwana का thickness कितना है? 4,000 ज़्यादा ज़्यादा 5,000. So 10 kilometer. 10 kilometer लो, 7 kilometer लो, ऐसे some rough thickness you just take. But it is not same thickness everywhere. It may be 2 kilometers somewhere. So maximum let us take, I should take a value of 7 kilometers, 7 to 10 kilometers. Its thickness, it is very rare of that too. Now, इसके नीचे कितना टेम्परेचर होगा? ऊपर में तो जीरो है सब. कितना टेम्परेचर होगा? सर 35 आप एवरेज ले लिया. 35 into 10, 350 डिग्री सेंटीग्रेड. यही है ना? नीचे. और if it is smaller thickness, you know, suppose 35 into 5, कितना हुआ? 175 डिग्री सेंटीग्रेड.
और इफ दिस ग्रेडियंट इज लेस, मैं 35 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सपोज 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 150 डिग्री सेंटीग्रेड. Could you understand these figures? So 350 is a very rare occurrences. Otherwise ये 150, 175 ये टेम्परेचर रेंज में रहता है. ये जो गोंडवाना सीक्वेंस यू आर सीइंग ना, if you go down at the base of Gondwana, it will be as hot as this, 150, 175 degrees centigrade. 350 is rare. 350 is rare. That is the thickest Gondwana, you know. Yes, sir. It is very hot for us. But मेटामॉर्फिज्म के लिए ये टेम्परेचर सफिशिएंट है क्या, ये बात करना है आपको. क्यों नहीं? बात तो इधर ही है. 175 डिग्री सेंटीग्रेड, यू नो, पानी तो बॉयल हो जाएगा. 100 डिग्री में पानी बॉयल होता है, इतना गर्म है. But why 175 is not sufficient for metamorphism? Or even suppose छत्तीसगढ़ भी ऐसे 5-6 किलोमीटर थिकनेस है, विंध्यान भी 10 किलोमीटर में भी. So why this temperature is not sufficient for metamorphism? You understood my point? Temperature तो है ही. Could you follow this point? So question is here. Why this temperature is not sufficient for metamorphism? Point is, आप जब चावल पकाते हैं, when you are cooking the rice, एक कटोरी में आप चावल ले लो, you take rice in a pot and put it on the fire. What will happen? Will it produce rice? It will not produce rice. Why? You require water. You require water to cook it. Cooking process. You require water. ये वही काम करता है. आपको जो इसको गोंडवाना को मेटामॉर्फिज्म करने के लिए पानी फैक्टर को लाना पड़ेगा. फ्लूइड पार्ट आई वाज टेलिंग यू ना, देयर इज थर्ड फैक्टर फ्लूइड. सो गोंडवाना के अंदर फ्लूइड है. So fluid will be heated up to 150 degree centigrade to say 175 degree centigrade. You understood this part? Fluid भी उसका अंदर है ना, वो भी गर्म हो रहा है. Could you follow this point? Now अभी to cook Gondwana sediments or any sediments that to produce a metamorphic rock at this temperature, पानी तो बॉयल होगा, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो भी बॉयल होते रहेगा. वो खाली बॉइलिंग होने से नहीं होगा. यू हैव टू प्रिपेयर ए सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आउट ऑफ इट. सुपर क्रिटिकल फ्लूइड. सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मतलब क्या टेम्परेचर है? 375 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना टेम्परेचर उसको चाहिए. व्हाट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इज दैट फ्लूइड, यू नो, वो जो वेपर एंड लिक्विड उसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं रहता, इतना गर्म हो जाता है. ये रिमेम्बर करो, दिस फॉर वाटर इट इज 375 डिग्री सेंटीग्रेड. वो सुपर क्रिटिकल कंडीशन को आना चाहिए 375 डिग्री सेंटीग्रेड और इवन मोर. आपको मेटामॉर्फिज्म, ये इज नॉट आवर खाना बनाना. पानी गर्म हो गया तो हो जाएगा. आपको रॉक को कुक करना है. यू हैव टू हैव द फ्लूइड इनसाइड, यू नो, टू रीच द सुपर क्रिटिकल स्टेज. द सुपर क्रिटिकल स्टेज विल कम एट 375 डिग्री सेंटीग्रेड. और यहाँ से प्रेशर का एक वैल्यू है, मैं दे देता हूँ, बट बाद में एक्सप्लेन करूंगा. 28 MPS में इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा बात है. प्रेशर कभी आएगा ना, उसका वो भी आएगा, बट इमेजिन करो ये टेम्परेचर उसको होना चाहिए. मेरा बात समझा ना? तो you have to have so much of temperature so that the water inside it will be in supercritical stage. यही करना पड़ेगा. थोड़ा सा खाली टेम्परेचर बढ़ने से नहीं होगा.
So to achieve the supercritical stage, supercritical fluid stage, you require some tectonic environment. Tectonic environment. टेक्टोनिक एनवायरनमेंट। ये सुपर क्रिटिकल स्टेज कहीं से मिलेगा उसको? गोंडवाना मिला नहीं है। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? व्हाट इज द टेक्टोनिक स्टेज? जिसमें बोला आपको हिमालय में मिला, ईस्टर्न घाट में मिला, आपको ग्रेड हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। गोंडवाना में क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज दैट इट हैज नॉट रीच दैट सुपर क्रिटिकल स्टेज। वो फ्लूइड सुपर क्रिटिकल स्टेज को गया नहीं है। It is just reached 175 degrees centigrade. Now to reach that fluid, in supercritical stage, you need a environment called subduction. Subduction. Subduction, you have read something in BSc? Yes, sir. Or no? Yes, sir. मैं इसको मिटाता हूँ। कैसे सबडक्शन होता है?